Good morning, sir. सर यस। सर मैंने आपको कल शाम को कॉल किया था। मेरा वो मतलब कोडाथन वाला लिंक आया है, तो अभी कुछ किया जा सकता है या मैं वही वाला अटेंड करूं? कोडाथन आया है तो उसी को दो, और क्या करोगे? कितने बजे एग्जाम है? उसका 6-7 बजे कह रहा हूँ कुछ। इवनिंग में? हाँ। अभी देखो, अगर कुछ अगर होता है, क्योंकि रात में मैं लगभग 10:30 बजे रात को मैं मीटिंग में था सिस्को के साथ। अच्छा। रेज किया हूँ तुम लोग का जो इशू था कि बच्चे ने विड्रॉ किया, उसके बावजूद भी उन लोग का आया है, ये लिंक आ गया कोडाथन का। तो बोले अब तो एंड मोमेंट है, लेकिन मैं बोला कि कल एग्जाम तो कल ही है, और आज लिंक आया है तो हम पहले से तो नहीं पता था, तो इसलिए हम तो आज ही कह सकते हैं मतलब जो भी इशू है। तो वो लोग अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं किए, बोले कि ठीक है, मेल डालिए, फिर हम देखते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो वी विल लेट यू नो। तो अगर कुछ ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं तुम लोग का ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर यस। सर मेरे को दो दो बार लिंक आया, मतलब दो अलग टाइम के लिए। एक 6 बजे वाला भी आया और एक 2:30 का भी आया, तो मैं अटेंड कौन सा वाला करूँ? तुम दो ईमेल से रजिस्टर कर दिया था क्या? नहीं नहीं, मेरे किड मेल भी दो बार मेल आया है। मतलब एक आया कि 24 जून को 2:30 PM से एग्जाम स्टार्ट है, आइडिया हम्म। था नहीं सर। और उसके बाद दूसरा आया फिर कि 6 o'clock से है। अच्छा, तो 2:30 से और भी किसी का है क्या, पता करो। खाली तुम्ही को आया है, और भी कोई है तुम्हारे बैचमेट जिसका 2:30 है? चेक कर लो एक बार। सर दूसरा वो सबको आया है। वो पहले यूरोपियन टाइम का ये लोग भेज दिए थे, फिर इंडियन टाइम का भेजे थे। अब ओ, सबको तो इसीलिए यस होता सर। है। तो इंडियन टाइम में कितने बजे दिखा रहा है? 6 बजे? हाँ सर, ठीक है हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। तो 6 बजे देना आप क्या? किसका लिंक था वो, आइडिया थन का, कोडाथन का? सर आइडिया था। सर आइडिया था। और कोडाथन का भी सेम टाइम ही रख दिया है? दोनों सेम टाइम? नहीं सर, कोडाथन का 7:30 है, आइडियाथन का 6 से 7 है। अच्छा, ठीक है। हेलो सर। हम्म। सर मेरा एक ही मेल है 7:30 बजे का। इसका कोडाथन क्या है? सर वहां पे तो लिखा नहीं है कुछ।
कोड विथ सिस्को लिखा होगा। हाँ, कोड विथ सिस्को, हाँ। हाँ तो वो हाँ कोड़ा कोड़ा था। था। The previous class we have done dynamic website hosting. Now in today's class we will see about the adding a database layer. So first we'll go for some basic of your database, and then we'll move for the lab. So fundamental of database first we'll understand from the student guide. Then we'll move to the guided lab, then challenge lab. सर येस्टरडे का चैलेंज लैब लेके थोड़ा डाउट था, मैं बोल सकती हूँ क्या अभी? हम्म सर मेरा जो Cloud9 का आईडी है वो ना कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब भी मैं उसको ओपन कर रही हूँ हमेशा रिकनेक्ट रिकनेक्ट दिखा के ऐसा आ रहा है कि फेल्ड टू कनेक्ट टू AWS टूल किट एंड, और कभी मतलब मैं कम जो कमांड डालने को है बैश टर्मिनल में वो मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं ओपन कर रही हूँ वो मतलब ओपन करते ही वो रिकनेक्टिंग रिकनेक्टिंग दिखा रहा है, और फिर बहुत देर बाद ऐसा आ रहा है कि अनेबल टू कनेक्ट टू AWS टूल किट, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। share your screen. Raise your hand. हम्म, एक सेकंड सर। हाँ। You can share now. यस, मैं थोड़ा ओपन कर लेती हूँ। सर 1 मिनट, थोड़ा वो लैब स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरा भी एक डाउट था, तब तक पूछ सकता हूँ जब तक ये स्क्रीन शेयर कर रही हो? हम्म सर एक्चुअली कल मेरा आखिर तक रन कर रहा था, मैंने लाइक वेबसाइट पूरा खोल रहा था, बट उसके अंदर जो ऑर्डर सेक्शन है वो नहीं, मैंने मेरा 30 में से 27 पॉइंट मेरे को मिल रहा है, बट डेटाबेस में जब मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट से उसमें रन करके देख रहा हूँ तो डेटाबेस में पहले शो नहीं कर रहा था कि मेरे वो सब मैंने
मैंने मैंने आइटम्स के डिटेल्स उसमें शो नहीं कर रहे डेटाबेस में, तो फिर लेटर ऑन में रिट्राई किया तो फिर सर वापस से एग्जिस्टिंग कुछ फाइल दिखा रहा है वहाँ पे, तो उसको कैसे करना है उसमें कंफ्यूजन लग रहा है। तो तुम स्क्रीन शेयर करोगे तभी हो सकता है ये तुम्हारा ओके डेटाबेस क्या। सर। कितना स्कोर आया सबमिट करने के बाद? 27 सर, सबमिट जब कर रहा हूँ तो 27 जितना आ रहा है। 27 आउट ऑफ 29, राइट? आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 30। यस सर। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ सर? या यू कैन, व्हाट इज योर यस सर। नेम, यू कैन रेज योर हैंड। श्योर सर, एक सेकंड। हाँ सर। यस यू कैन। यस सर, आई एम शेयरिंग। आई गेस इट इज विजिबल राइट नाउ। हम्म। जस्ट अ सेकंड। यस सर, ये मैंने पिछले वाला टर्मिनल खुला हुआ है, अभी तक पता नहीं कैसे खुला हुआ है, बस खुला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं सर कि डेटाबेस में सिर्फ इतना ही शो कर रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में जब 27 पॉइंट दिखा रहा था, उसके बाद फिर लेटर ऑन में दोबारा जब रिट्राई करने गया तो और वो फिर आ रहा है, मैंने डेटाबेस दोबारा, ये देखिए ये सब एरर आने लग गया था। सेकेंड टाइम जब मैं इनवैलिड रिस्पॉन्स, ये सब एरर क्रिएट हो गया, फिर सेम वापस से रिपीट हुआ। बट इसके बाद दोबारा जब मैंने रन किया तब आई गेस, देखिए ये 2 बार हुआ, पर ये तीसरे बार में फिर ये रन कर गया, तब डेटाबेस का वो डिटेल शो कर रहा है। बट सर इसके बाद फिर मेरा मैंने लास्ट में जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को बता रहा है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। वो कहाँ गया? हाँ, ये देखिए ये फाइल एग्जिस्टेड। जितने बार मैं यहाँ पे ये एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट वो रन करने जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है सर। मैंने यहाँ तक सही चला है। कमांड सही से टाइप किया था सारे कमांड जो? सर प्रॉपर मैंने क्रॉस चेकिंग हर एक स्टेप में मैं कर रहा था सर, बट मैं आपको अपने मेन उसमें दिखाता हूँ जहाँ पे, एक सेकंड। दोबारा से ट्राई किया पूरा एंड करके? हाँ सर, मैंने 2 बार किया था सर, एंड तक जा ही नहीं रहा है। बात ये हो जा रहा है एंड में जा रहा है तो पहले वाले पेज का वो खुल ही नहीं रहा है। और दूसरे वाले पेज मैंने दूसरे सर्वर में जब मैंने आपका रीजन वाइज US1 फिर US2, तो US1 में तो वो रन ही नहीं कर रहा है। मैंने जब स्लैश कैफे डाल रहा हूँ तो मैंने एक चीज भी एरर बता रहा है, पर सेकंड मैंने US2 में जब कर रहा हूँ तब वो मैंने काम कर रहा है, बट उसमें भी मेन्यू फिर नहीं आ रहा है। दिक्कत ये हो रहा है सर। Did other people are also facing this issue? नो सर, एक्चुअली कहीं इसने इनपुट बनाने में गलती की होगी। मेरे साथ भी सेम एरर आ रहा था, फिर मैंने डिलीट किया और फिर से बना दिया। तो सर डिलीट वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिलीट करना कैसे है इंस्टेंस? मैं कमांड में मैंने यूट्यूब में भी थोड़ा वो किया सर रिसर्च, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई वो मिला नहीं। एक्शंस में टर्मिनेट का ऑप्शन होगा। ओके। मैनुअली भी कर सकते हो, और लाइक हाँ यहाँ पे भी तुम सर लोग। आई गेस वो क्लाउड9 की फाइल में कुछ गलती होंगे इसीलिए। इंस्टेंट स्टेट में जाओ, उसमें आता है टर्मिनेट का हाँ। ऑप्शन। नहीं, ये तो इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा। तुम डेटाबेस को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं ना? व्हाट यू वांट? सर मैं तो क्लाउड या 9। तो पूरा उड़ जाए, मैं वापस से पूरा फ्रेशली में हाँ बैठ तो के कर लूँ। फिर ये कर दो, उससे अच्छा एंड कर दो लैब। अगर पूरा खत्म ही करना है तो यू शुड एंड द लैब एंड यू कैन रीस्टार्ट। बेस्ट वे इज दैट, सो बिकॉज इन दैट वे सर आई होप सब कुछ रीसेट हो जाएगा ना? हाँ रीसेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर तुम करते हो इंस्टेंस को एंड कर दोगे तो फिर भी वही वही हुआ। आई मीन एट द एंड में ओके। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, बिकॉज तो आप इंस्टेंस सर कहना चाह ऑलरेडी रहे हैं कि मैं यहाँ से ही सीधा उसको करूँ? एंड, हाँ ऊपर जाओ स्क्रॉल करो, हाँ। यहाँ से एंड कर दो और फिर से रीस्टार्ट कर लो।
वैसा कर सकते हो। अगर तुम केवल पार्टिकुलर डाटाबेस को अगर तुम्हें ये करना है, डिलीट करना है या टर्मिनेट करना है, तो तुम ये कर सकता है। उसका कमांड होता है, स्टॉप करके कमांड होता है, वो डाल सकता है। ओके। स्टॉप। नहीं सर, मैं स्क्रैच से ही कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का काम है, हो जाएगा वो। मैं इनला भी कर रहा हूँ सर, तो फिर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ मैं। हाँ या ओपन। एक सेकंड। ओके, who was the सर अभी मेरा Cloud9 खुल नहीं रहा है, ऐसे 400 एरर दिखा रहा है। अरे तो इसीलिए तो बोला था स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, कर रही हूँ। सर दिख रहा है, हम्म एक सेकंड सर। इसको ये लेफ्ट ले जाओ तो, ये जो तुम्हारा गाइडेड लाइव का इंस्ट्रक्शन है, इसको ड्रैग करो लेफ्ट में। वेयर विल ड्रैग इट, डू यू अंडरस्टैंड? नो नॉट हियर, हाँ हाँ, वहाँ वही वही, वहां से इसको ले जाओ, लेफ्ट ले जाओ, फुल स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारा फुल कंप्लीट स्क्रीन नहीं है। हम्म, वो जो क्रॉस मार्क दिख रहा है ना, वहां पे हाँ क्लिक, ऊपर ग्रेड्स के ऊपर, जस्ट डिटेल्स के राइट साइड में। हाँ हाँ, उसको ओके, क्लिक करो, okay? हाँ। हम्म अभी ठीक है। इसको ड्रैग करो, इसको फुल लेफ्ट ले जाओ। स्क्रीन दिख रहा है ना, फुल स्क्रीन हाँ दिख रहा अभी है। अभी थोड़ा फुल स्क्रीन आ गया, लेकिन अभी भी एक चीज और चाहिए, रुको रुको, जस्ट वेट वेट, डोंट कॉपी हाँ ना। हाँ। इसको ड्रैग करो तो पूरा इधर लेफ्ट साइड में, ये जो तुम्हारा गाइडेड लैब का जो इंस्ट्रक्शन है ना, हम्म इसको लेफ्ट करो पूरा। नहीं ये नहीं, हाँ इसी को तुमको लेफ्ट साइड में ले जाना है। हम्म हाँ वही से होगा। यस यस, ड्रैग टू लेफ्ट, जस्ट वेट, नाउ कॉपी, जस्ट वेट, दैट मच जस्ट इनफ। नाउ कॉपी द Cloud9 URL। यस, हम्म। do right click, copy, open incognito, no, just do one thing, open new tab directly। ये ये मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। पोज कर सकती है अगर नहीं हो रहा तो। हाँ इधर जाओ, ऊपर में जो प्लस है, न्यू टैब ओपन करने का, इस पर क्लिक करो। your screen is freeze, I can't see anything। हम्म, एक सेकंड सर। सर अभी दिख रहा है। security token included, back to the console। you have pasted a link, this error is coming। यस। okay, go to the new incognito window, open new tab। कॉग्निटो। तुम्हारा कुछ अपडेट भी चल रहा है, फिनिश अपडेट। सर वो कानवास एज पे खुला हुआ है और ये क्रोम है, शायद इसीलिए हो रहा है ये। पेस्ट करो तो लिंक, यहाँ ऐसे लिंक कहीं भी काम करेगा। यहाँ पेस्ट करो लिंक तुम इनकॉग्निटो में। ये आ रहा है। तुम्हारा तो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, तुम्हारा 50% वर्क आई कैन सी, एक ही बार रिजल्ट आ रहा है तो मैं दिख रहा हूँ। पहले तुम क्या एक्टिविटी कर रही है आई कैन सी।
सर स्क्रीन शेयरिंग में मैं वही पेज क्लिक कर रही हूँ जिसको मुझे शेयर करना है। फुल तो स्क्रीन शेयर करो ना। अरे बाबा, तुम फुल स्क्रीन शेयर करेगी तो जो भी अभी एक्टिविटी करेगी मेरे को देख 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 पाऊंगा मैं। अब तुम एक एक स्क्रीन कर करके शेयर करेगी तो आधा तुम करे रहेगी, फिर बाकी वाला मैं देखूंगा, आधा तुम करेगी। आई कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट यू इन दिस केस। हाउ आई डू दैट? यू शुड शेयर इंटायर स्क्रीन ना। यस सर। Unnecessary you are also wasting your time or my time. One by one if you share a screen, it will take 5 to 10 times. As many page you will open, as many time you have to share a screen. So better share entire screen. What is the issue? सर अभी शेयर हम्म। की। इसमें जो है ये तो फिर से अब तुम्हारा इनकॉग्निटो का यही है, फिर से दोबारा लॉग साइन इन करने के लिए बोलेगा। साइन इन करो, देखो एक बार। सर ये IAM यूजर या रूट यूजर में है तो IAM यूजर होगा ना। तुम्हारा ईमेल वगैरह डालो। नहीं, ये फिर तुम्हारा अकाउंट आईडी लेगा, ये तुम्हारे पास नहीं है। रूट यूजर में क्या मांग रहा है, एक बार क्लिक करो तो रूट यूजर में ईमेल डालो यहाँ। ये दिखा रहा है। तुम्हारा इसी अकाउंट इसी ईमेल पे अकाउंट है ना? हाँ सर। एक बार रिफ्रेश करो तो इसी पेज को। ठीक है, तुम एक बार यूआरएल में जाओ, छोड़ो इसको, क्लोज कर दो, ये विंडो को क्लोज करो। यूआरएल फिर से कॉपी करो एक बार। यही प्रॉब्लम हो रहा है। No, once again just copy the URL what I ask you, go to the instruction. अच्छा Please कॉपी करूँ। ओके close this ओके browser. ओके Different browser, don't use ओके it. ओके। Where you have opened that your no, this one also close. You have opened in which browser your guided lab? This is क्रोम। Chrome. Okay. So here only just open the new tab. Don't go to any other browser. Copy it here. Cloud9 URL, copy it. Yes, paste it in. Hit enter. कंट्रोल शिफ्ट ई को प्रेस कर दो तो अगर रुको रुको अभी आ जा रहा है, अगर आ गया तो ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ई को सर्च आगे तो गया तुम्हारा। हाँ बट अभी पता नहीं ये होगा या नहीं। कल तो ये नहीं हो देखिए रिकनेक्टिंग दिखा रहा है। क्या? बार बार मैं ओपन करती हूँ तो रिकनेक्टिंग दिखाता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी ये पूरा नहीं लेगा। अब वो लेगा क्या। लेगा, तुम टाइप करो, देखो इसको इसको ड्रैग करके ऊपर कर ले जाओ, एवरीथिंग इट विल वर्क। जस्ट ड्रैग इट। हाँ, चलो कोड यहाँ पर टाइप करो, कोड सर्विस क्या था, कोड तुम्हारा पहला कोड तुम लोग का क्या था, चेक करो तुम लोग का फर्स्ट कोड था, चेक करने का स्टेटस वगैरह। कहाँ चला गया। Go to the model, not here, just go to your model. Yeah, left side, yes, drag it, drag this one from right, and इसका काम हो गया, अब इसको ड्रैग कर दो, हाँ इसको हटा दो। yes, go down, bit down। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा ये वाला। just copy that, check the version। you do right click and copy, वहां से ऐसे सर control ये देखिए। unable to run toolkit panel to use this feature please
रिफ्रेश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर से रिफ्रेश कर दो। यहाँ उधर राइट साइड में है, इसको इसको क्लोज करो, इसको सर कौन रिफ्रेश सा और राइट राइट क्लिक करके कॉपी करना कोड। वैसे कंट्रोल सी से बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं लेता है। ओके ओके सर। राइट क्लिक करो कोड को और कॉपी करो, फिर से कॉपी करो एक बार, select the code once again. No, not like that. Entire code you have to select. Cat, हाँ, yes. Here right click, just do right click and paste. Yes, hit enter. सर एंटर नहीं ले रहा है। Enter मारो। एंटर वो मार रही हूँ। वो फ्रीज हो गया है, वो होगा तुम्हारा, स्लो है थोड़ा। सर कल भी यही हो रहा था, ये खुल ही नहीं रहा था। मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा था और कुछ देर बाद अभी दिखाएगा कि कांट एक्सेस द AWS किट। सर माइक्रोसॉफ्ट एज में कर रही है, क्रोम में करेगी तो मे भी हो जाएगा। अभी तो क्रोम में कर रही थी इससे पहले। सारा चीज क्रोम में। तुम्हारा ब्राउजर तुम अलग अलग यूज क्यों कर रही है? एक ही ब्राउजर यूज करो, जहाँ जो कर रहे हो डिफरेंट ब्राउजर, वो थोड़ा ये हो जाता है, स्लो होता है। चैलेंज लैब को भी क्रोम में खोल के करो तब हो जाएगा। सब कुछ क्रोम में करो। ओके सर, मैं एक बार ना करके ट्राई करके फिर डाउट हुआ तो आपको बताती हूँ। हम्म। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो मैं वापस से आपको ये डेफिनेटली होगा, सारे बच्चे को हो रहा है, तुम्हारा कैसे नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तुम ब्राउजर वगैरह सब ठीक करो पहले, और पहले से 10 ठो ब्राउजर खोल करके मत रखो, पूरा क्लोज करो। जो जो जिसका अननेसेसरी जो चीजें हैं वो हटा कर ओके रखो। ओनली द योर आईडी शुड बी ओपन एंड योर गाइडेड योर इंस्ट्रक्शन शुड बी ओपन। Rest of the things, everything should be closed, and use any one browser. Either if you are using Chrome, so everything should be Chrome, so that smoothly it will function. ओके सर। You can try, yeah. सर मैं करके देखती हूँ, अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। Okay, so just see here, guys. We were discussing about the database. That is your module 6, adding a database layer. So in this module, when you will go to the guided document or student guide, where you see like objective of this database layer are like you will study about the compare database types and services which will be offered by AWS. Then we'll explain when to use AWS Relational Database Services, RDS. We will be seeing that the advanced features of RDS. Then when to use Amazon DynamoDB. You see the comparison between RDS and DynamoDB, because sometime you are seeing that DynamoDB written somewhere RDS has been written, right? So in this case, you should know about that, like what are the differences of DynamoDB, RDS, MariaDB, right? These are the different database services, right? So in this particular module, you will understand about that, and then we'll identify AWS purpose build database services, migrate database into the AWS database, and when design and deploy the database services. So these are the things which you will study in this student guide. If you have not gone through, so all of you should go through that. I will explain some of the part which are very important as per the concern of the lab, as well as for your future interview questions. So in this case, like a hands-on lab in this model will be on guided lab, creating Amazon RDS database, and the challenge lab will be on migrating a database to Amazon RDS. So there will be two lab in this particular module. One is for the creating, another is for migrating RDS. Now just have a look, like
our goal is that what that our scenario, all the modules is based on Martha and Frank. I hope you remember, like there was a scenario of Martha and Frank. Hello, actually I'm in the class. I will call you. Yeah, good morning. Actually I'm in the class. I'll call you after 10. Okay. No, not for everyone. We can have a like yeah, you can call Amit sir and you and me. All three people can be there. Okay. Yeah. 120 will be fine because my class will be over at 1:15. So 120 we can plan. Actually, regarding all the Volvo program is going on, na? So regarding all the status of program and all, we will discuss. Okay. Yeah. So just see it. So in this case, if you'll go for the cloud architect design, database layer. Okay. So in the first case, you have to evaluate that available database option before selecting a a data management solution so that we can optimize the performance. Then you need to secure your infrastructure effectively so that the database will be durable and safe from the threats or from any attackers. So that is your target. The two things, the first of all, you have to, the first is optimizing the performance and the second is your database should be secure. It will be creating the secure infrastructure and there should be no chances of the attack in your database. So that is your main goal. You are an architect, solution architect engineer. So you have to focus on both things. Even you will, when you go for the lab also, that thing you have to assure. Okay. If you'll read this paragraph, like this slide asks you to take the perspective of the cloud architect as you think about how to approach cloud network design. Keep this consideration in mind as you progress through this module. Also remember that the cloud architect should work backward from the business, need to design the best architecture for a specific use case. As you progress through the module, consider the cafe scenario, which I was discussing it earlier, whenever you are going for any challenge lab, guided lab, or any module when you are understanding it. So you have to keep it in your mind, your goal is that regarding the cafe, right? That the business that Frank and Martha has a plan and you have to make it global business, right? And you have to deploy all those things on the cloud. So that is your target and you are behaving like a student. Who is the student? You will be one of the student, those who are learning cloud architect and you are exploring so many things. So in this scenario, who is doing this job? Can anyone tell me? Do you remember? What is the person name? Hello? Who is that person? अरे तुम लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं नहीं खाली क्लास अटेंड कर रहे हैं? Who is that person? Sir, Nikhil, sir. Nikhil. So Nikhil is the guy, like you guys are, behaving how Nikhil is understanding the things, how he is exploring, how is designing this all architect. So like that, you people are that, similar to him. So for this case, if you see in this module, as you progress through the module, consider the cafe scenario presented in the course as an example business need. So that's why just now I ask you questions. So you need to understand first the business scenario and accordingly you have to proceed. Yeah. So we were talking about as the progress through the module, consider the cafe scenario presented in the course and as an example business need and think about how you would, address this need for the fictional cafe business. So main goal is that only, I mean, the cafe business, how you can enhance and how much it can be global. You can make it as much as possible so that everybody is the business should be reached to everybody. I mean, the advertisement,
all the product, everything should be reached to everyone, right? So that is the main goal. And in this case also, that the business scenario that will be considered, right? And if we come to this slide, like the database layer considerations, adding a database layer. So on there you see like database consideration is like the first and important thing is that scalability. So how much throughput is needed? Will it scale? That the first question should come in your head. Coming to the next, storage requirement. So will the database need to be size in the gigabytes or terabytes or the petabytes of data? So you have to check with that first of all, like what is the storage capacity and how much data you are going to store, right? The first is throughput you have to check. Then you have to check with the storage. Then the database characteristic also you have to check. What is your data model and what are your data access pattern? And do you need low latency? Low latency or throughput, do you know that throughput and low latency? तुम जानते हो? What is the difference between latency and throughput? Can anyone tell me? It's your network, computer network question. You all have completed computer network course. I mean, especially for the CSIT and electronics student. For other people, I will explain you. All non-CSIT and electronics. But at least CSIT people should answer me this question. Difference between latency and throughput. So Batao. latency means the time delay for transferring or exchange of data that is taking place. While throughput is the amount of means how much data you can transfer or share in a particular amount of time or per unit of time. Yes, Sir, good. latency takes about ये कौन आंसर कर रहा? केशव था क्या? केशव? Yes, sir. अरे तुम्हारा आ गया ना लिंक आइडियाथन का? जी सर, जी सर. चलो, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. बहुत परेशान हुआ था, तुम बार बार ऑफिस दौड़ रहा था, ये लड़का 4 बार आया है TNP, परेशान हो गया था. चलो फाइनली मिला तुमको, वेरी गुड. जी सर, थैंक यू अच्छा सर. परफॉर्मेंस दो, जी सर. एग्जाम पास करो, आगे बढ़ो. या नेक्स्ट पर्सन. the latency is about speed and throughput is about the capacity. Yes. So sorry, again tell me what you said. Latency. So latency is about speed and throughput is about capacity. No, you cannot say like that. Speed, latency is a speed. So what is the meaning of low latency? Speed को low करोगे? Do you need to low latency? I mean, do you need to low speed? You may try to make the latency is the delay between sending and receiving message. Yes, that is the right answer. So whenever you are sending any messages and you are expecting to reach at that particular time, and if it is not reaching on that expected or standard time, so there is a delay in between. So that is what is a latency. When your sender is sending message, and suppose I am sending message, it should reach. Just for the example, suppose I have sent a message at 8:48, right? And it should reach by 8:49. That is the standard timing. Suppose I am giving you. I have just now sent, and within 1 minute it should reach to you. But it takes a fraction of second to reach. I'm just giving example. Don't think like 1 मिनट में मैसेज रीच करेगा, ऐसा नहीं होता. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है कि 1 मिनट के अंदर मेरे को तुम्हारे घर को रीच करना है, ठीक है. अब मैं 1 मिनट के अंदर नहीं रीच कर रहा हूँ. ऐसे जनरली अगर कोई मेरे बीच में ऑब्स्टेकल नहीं आता है तो मैं उस टाइम में वो जो टाइम पीरियड है उसमें मैं तुम्हारे घर को रीच कर सकता हूँ. लेकिन अगर कुछ बाधा आ गया, मे भी हो सकता है कि कोई बीच में मेरे को मिल गया, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई लिफ्ट मान लो खराब हो गया, या कुछ भी हो सकता है, राइट. तो मैं उस टाइम के अंदर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तुम्हारे रूम को या तुम्हारे घर को, राइट. तो जो 1 मिनट का टाइम था वो मेरा स्टैंडर्ड टाइम था, और वो टाइम में अगर मैं पहुंचता तो देयर वाज नो डिले. देयर इज इन दिस केस देयर इज नो डिले. बट when there will be a condition where it should suppose, I have to reach to your home within 1 minute, but I am taking 2 minutes, 3 minutes or 4 minutes. So whatever extra time I'm taking to reach to the destinations, so that is what is a kind of latency is creating. That is a delay, right? That is a delay that is creating. So here, whenever you are creating a database, so you have to make sure that there are few things. The first, you have to optimize the throughput.
So how much throughput is needed? So throughput is what basically the current status of speed of your data. देखो दो चीज होता है, एक होता है बैंडविड्थ, एक होता है थ्रूपुट. तो हम लोग जो बोलते हैं ना जो इंटरनेट स्लो है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत स्लो है, लो बैंडविड्थ है, या इंटरनेट बहुत स्लो है, ऐसा बोलते हैं. बट एक्चुअली नेटवर्क के हिसाब से अगर देखोगे, अगर यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर और यू आर ए एडमिन, तो योर करेक्ट आंसर शुड बी द थ्रूपुट. योर थ्रूपुट इज लो, यू विल से दैट. क्योंकि थ्रूपुट जो होता है ना, वो करंट स्पीड स्टेटस बताता है तुम्हारा डाटा कितना स्पीड से प्रोसेस कर रहा है. और बैंडविड्थ होता है वो इंटायर पर्टिकुलर, जैसे तुमको जो है जियो एयरटेल का तुमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, उसने बोल दिया कि 5 Gbps तुमको डाटा हायर स्पीड देगा, तो हाईएस्ट स्पीड कितना रीच कर सकते हो तुम, वो होता है बैंडविड्थ. जो हमारा मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो होता है, उससे ज्यादा आपको नहीं देगा. आपको एलोकेट अगर 5 Gbps कर दिया, तो आप 5 GB से ज्यादा स्पीड आपको नहीं होगा, जितना भी स्पीड होगा उससे नीचे होगा. और करंट स्पीड वो 5 GB फिर नहीं देगा, वो आपको 1 होगा, 2 होगा, MB में जाएगा, KB में भी चला जाएगा, वो लो अप डाउन ये सब होते रहता है. तो वो जो करंट स्पीड अप डाउन जो हो रहा है ना, दैट इज व्हाट एक्जेक्टली इज द व्हाट इज अ थ्रूपुट. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. So all these things that you need to measure in this case, like whenever we consider the database, like first of all, you have to make that the throughput should be high, your bandwidth should also be high, then your latency should be low, delay, I mean, when you're talking about latency, so you can understand like delay should be minimum as much as possible. And then another thing, like when you will talk about durability, so what level of data that will be a durability, you will focus on availability, recoverability. I mean, whenever any there will be a data loss, or the data should be available for 24/7. That things that you need to maintain. Regularity, obligations, everything. I mean, that you have to focus when you consider your database. Like suppose your database you have created for the railway ticket booking system, right? So on there, your database should be every time should be available. Yeah, definitely that when Tatkal ticket will be booking at that time, your data will be on there. The huge, there will be a traffic on that because everybody want to book the ticket at that particular duration, maybe 11 or 11:30 between. So at that time, there will be a huge load. So in this particular period of time, what kind of scalability you will provide, right? So that it will be, accessible to all the users. और वही पहले के टाइम में जब क्लाउड नहीं हुआ करता था, तो देखते थे तुम लोग कि बहुत बार खासकर बैंकिंग का वेबसाइट हो गया, रिजर्वेशन काउंटर जो रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट का जो वेबसाइट है, फ्लाइट टिकट का तो ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन ये जो ट्रेन टिकट का इशू बहुत होता था पहले. बहुत बार बोलेंगे सर्वर डाउन हो गया. बैंक में जाओगे तुम अपना कुछ काम के लिए और वो बोलेंगे अरे लिंक फेल है, तो सर्वर डाउन है, ऐसे बोला कर रहे थे. अभी भी सर कभी कभी हो ही जाता है सर. अभी भी मतलब होता है थोड़ा बहुत. क्योंकि एक्चुअली वो लोग पूरा फुल्ली तुम्हारे डाटा को इस पे नहीं रखते ना क्लाउड पे. वो लोग सिक्योरिटी का एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि बैंकिंग वेबसाइट जो है वो उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है सिक्योरिटी चैलेंज, क्योंकि वहाँ से मनी रिलेटेड चीज़ें हो रहा है और ट्रांजेक्शन के केस में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न हो जाता है. इसके वजह से वो लोग जो है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते. वो अपना ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को जो है एवरीथिंग क्लाउड पे नहीं रखना चाहते, जिसके वजह से ये इशू होता है. लेकिन फिर भी बहुत सारे उनके फाइल्स जो है कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वगैरह जो है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाउड पे स्टोर है. बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट द ट्रांजेक्शन, सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी वेरी इट्स द टाइम वेयर you have to take care of everything. I mean, from the bank, if you are working from the bank side, so they have to very very sincere and very you can say that like a crucial way they have to process. Like it's the time where when do the transaction within a fraction of second, if any security breach will happen, any vulnerability will come in their transactions, so there will be chances that billions of money can go in any side. Not for you, there were so many customers, so many users are doing the transaction at the same time. So there will be a chances of this. So that's why they always try to secure. And if there will be any kind of, if they are finding any vulnerability, any weakness in the system, immediately they stop their server. Immediately they stop or isolate our entire network. So that's why you will find sometime in the bank they're telling, okay, link fail hai. Abhi bhi
ऐसा आता है केसेस, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी सस्पेंशन अगर आता है, थोड़ा सा भी उनको लगता है, शक होता है कि अगर कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योरिटी ब्रीचेस होने वाला है या वनरेबिलिटी इसमें आने के चांसेस है, तो अटैक होने के चांसेस है, तो इमिडिएटली वो सारे जो भी उनका सर्वर होता है, जिस जिस रीजन से कनेक्टेड होता है और जो जो एज लोकेशन होगा वहाँ से वो लोग इमिडिएटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए वो क्योंकि मेन रीजन वही होता है, सिक्योरिटी पर्पस होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Scalability, we always used to discuss, and you all know that what is scalability. I hope everybody know that. Anybody who don't know scalability, because it's the best advantage of your cloud, and we have discussed many times that cloud, the one of the best advantage is your scalability, right? And anyone, if you don't know about scalability, just let me know. I can explain you once again. Okay, everybody know about the scalability. That's great. Now coming to the storage requirement. Do I need to explain or have you understood? Storage requirement. Understood, sir. Okay. Data characteristic. So just have a look for the data characteristic because this module is based on data. So consider what you need to store as you select a database. Okay. The first and most important point is that which type of data you are going to store. ये तुमको पहले identify करना पड़ेगा, right? फिर next case क्या है? The core of any database choice include this characteristic of data that you need to store, retrieve, analyze, and work with. And these characteristics include your data models like the relational, structural, or semi-structural, using the highly connected data set or time series, राइट? अब देखो कुछ डाटाबेस होते हैं रिलेशनल डाटा। रिलेशनल मतलब क्या बोलो? व्हाट इज रिलेशनल डाटाबेस? इज इट रिलेशनल? Tabular form of database. हाँ, कि जो हमारा मान लो एक टेबल है दूसरे टेबल के साथ रिलेटेड है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे डाटाबेस में फॉरेन की, कैंडिडेट की, डू यू नो दैट? प्राइमरी की। तो Yes, sir. when we'll relate one database to the another database, I mean one table to another table, which key we use generally? Foreign key. Foreign key, right? And uniquely you want to identify entire data, your Excel. So for that case, which key you use? प्राइमरी की। तो ये सब कंसेप्ट जो है ये हमारा डाटाबेस में आता है। और रिलेशनल जब डाटाबेस हम करते हैं तो हम लोग रिलेट करते हैं टेबल को, जिसके लिए हम लोग आरडीएस ज्यादा कर जो सर्विस है उसको एनेबल किया जाता है AWS प्लेटफॉर्म पे। दैट इज योर कॉल्ड इटसेल्फ, द नेम इटसेल्फ इज अ रिलेशनल डाटाबेस सर्विस, राइट? देन वी हैव स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। कुछ डाटा होते हैं रॉ फॉर्म में रहेंगे, कुछ है कि हमारे सीक्वेंशियल उनका टेबुलर फॉर्म में है, उनको हम आसानी से, या ऑडियो फाइल एक पूरा कलेक्शन है, कुछ वीडियो फाइल का कलेक्शन है, तो हम उसको सेग्रीगेट करना आसान होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सारे डाटा मिक्स होके आ गए, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट फाइल है, तो इस टाइप के डाटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं, राइट? सेमी स्ट्रक्चर फिर क्या होगा बोलो? कैन एनीवन टेल मी? स्ट्रक्चर तो चलो समझ आ रहा है, The data like pictures, videos. What is semi-structured? हेलो सर। हाँ बोलो। सर बैंडविड्थ और प्रोपागेशन टाइम क्या सेम होता है? बैंडविड्थ एंड प्रोपेगेशन टाइम। बैंडविड्थ तो तुम्हारा ये हो गया कि कितना तुम्हारा जो है हाईएस्ट स्पीड जो है तुम्हारे नेटवर्क का हो सकता है, दैट इज योर बैंडविड्थ। और प्रोपेगेशन टाइम तो ये हो गया ना, प्रोपेगेशन टाइम वो टाइम और बैंडविड्थ एक स्पीड हुआ, एक स्पीड का यूनिट को क्या बोलता है? हाँ बोलो सर। बैंडविड्थ जो हुआ वो एक स्पीड को दिखाता है और प्रोपेगेशन टाइम टाइम को दिखाता है कि मतलब कितना देर लगा उसको पहुंचने में। हाँ मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक। हाँ, सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब तुम डाटा को सेंड कर रहे हो, बैंडविड्थ तो हो गया हाईएस्ट स्पीड, कितना मैक्सिमम स्पीड रीच कर सकता है, और टाइम कितने टाइम पीरियड में, जैसे आपका डाटा सेंडर अगर है एक पैकेट को भेजा और फिर वो रिसीवर को गया, ठीक है, अब उसके बीच में कितना टाइम लगा उसको रीच करने में डेस्टिनेशन को, तो वो प्रोपगेट हो रहा है वहां पर डाटा, मतलब एक एक सोर्स से डेस्टिनेशन को प्रोपगेट हो रहा है, उसके अंदर फिर कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, कितना टाइम पीरियड है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना, ये जब प्रोपगेशन टाइम, ये तुम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े होगे
कि ये डिपेंड करता है कि आपका इस पे डिले, अगर डिले ज़्यादा है तो फिर प्रोपगेशन टाइम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर डिले लो है तो प्रोपगेशन टाइम उसमें क्या होगा, बोलो। लो हो जाएगा, लो हो कम जाएगा। हो जाएगा। मतलब जितना डिले कम उतने प्रोपगेशन टाइम जो है उतना ही कम होगा। फास्ट कम होगा। हाँ। कम होगा मतलब डाटा उतना ही फास्ट डेस्टिनेशन रीच कर जाएगा। तो ये टाइम को बताता है, वो स्पीड को बताता है। अगर बैंडविड्थ का बात करोगे ना तो वो एक्चुअली डाटा का प्रोसेस का स्पीड बताता है, और ये जो है टाइम, नाम ही इटसेल्फ है ना, प्रोपगेशन टाइम है, तो ऑब्वियसली टाइम को बताएगा। ओके ओके, सर। या सो लेट्स मूव ahead with the next one. Data access, how do you need to access your data? Extend how much you need to low latency data. ये तो हम अभी डिस्कस किए हैं कि हमेशा डाटा जो प्रोसेस होगा उसका फोकस मेन यही होता है कि लेटेंसी कम होना चाहिए। प्रोपेगेशन टाइम, चलो ये एक बंदा पूछ दिया तो उसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो लो लेटेंसी होना चाहिए, प्रोपेगेशन टाइम क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? कम होना चाहिए। प्रोपेगेशन जितना टाइम कम होना चाहिए। and then whether there is a particular data record size, or you need to you have in mind like what is said. Let me read it once again and read from here. कहाँ से स्टार्ट किए थे? The extent to which you need low latency data, that is fine, you all understood. And whether there is a particular data record size you have in mind. Okay, so it depends. I mean, देखो बहुत सारे ऐसे डाटा है, जैसे हम लोग कोई मूवी का फाइल जो है किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पहले से पता रहता है क्या कितना साइज है उसको। हमारा अगर इंटरनेट स्लो है तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, अरे ये तो सेंड करेंगे जाएगा ही नहीं। ऐसा होता है नहीं? मान लो 2 GB का फाइल है, तुम्हारा खुद ही इंटरनेट पूरा स्लो है, अब तुम ड्राइव में भेजना चाह रहे हो तो वो बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो तुम सोचते हो कि चलो अभी इंटरनेट जब फास्ट होगा या वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो हम उसको सेंड करेंगे। तो वो भी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लाउड में जब हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम सारे चीज़ को फोकस करते हैं कि किस टाइप का डाटा है, स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, साइज क्या है डाटाबेस का, कितना हमारा नेटवर्क का लेटेंसी हो सकता है, बैंडविड्थ हाई कितना, मतलब हाईएस्ट स्पीड कितना हो सकता है, थ्रूपुट, करंट थ्रूपुट क्या है, हमारा करंट स्पीड क्या है हमारे नेटवर्क का, उसको हम फोकस करते हैं। तो एवरीथिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, सो ऑल द नेटवर्किंग थिंग्स, दैट्स व्हाई वी से दैट लाइक द क्लाउड, cyber security, these are the the courses which are if the student is having networking knowledge, they can grab those things very easily. I mean, very easily they can understand these things. So networking is everywhere, so you need to understand. Now just come to the next topic, which is one of the part of your database, that is your durability, right? So if you'll see, like the data durability refer to the assurance that you or that your data will not be lost, and data availability refer to your ability to access your data when you want to. तो देखो दो चीज है डाटा, एक ड्यूरेबिलिटी है, कोई बच्चा पूछ भी रहा था एक बार, तो ड्यूरेबिलिटी क्या है, मतलब ये एक एश्योरेंस देता है दैट योर डाटा विल नॉट बी लॉस्ट। मतलब जैसे होता है ना टीसीपी और यूडीपी, हम लोग दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तुम लोग पता है? नेटवर्किंग यस जो पढ़े सर। होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यस ध्यान सर। रखना कि दो चीज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, एक यूडीपी पार्ट काम करता है, ठीक है? तो जब हम टीसीपी की बात करते हैं ना तो वो एश्योरेंस देता है कि हमारा डाटा अगर लॉस भी हुआ तो वो रीट्रांसमिशन कराएगा। यस और नो गाइस? टीसीपी एश्योर करता है ना कि अगर हम डेस्टिनेशन को नहीं रीड कर रहे डाटा तो वो फिर से चेक करेगा और फिर से रीट्रांसमिशन शुरू करेगा। लेकिन यूडीपी क्या एश्योर करता है? ये नो सर। यूडीपी तो नहीं करता। तो यहाँ पे डाटा ड्यूरेबिलिटी जो है ये तुम उससे रिलेट भी कर सकते हो कि ये एक क्या करेगा, एश्योरेंस देगा कि डाटा तुम्हारा जो है, इट रेफर टू द एश्योरेंस दैट योर डाटा विल नॉट बी लॉस्ट, राइट? सो दैट यू हैव टू मेक श्योर, लाइक अगर क्लाउड पे डाटा है, तुम कुछ डाटा स्टोर किए और तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर जो है डाटा को लॉस कर दिया, अब तुम जब रिट्राइव करने जा रहे हो डाटा मिल ही नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पे वो क्लाउड सर्विस तुम कभी नहीं लोगे। तो ये चीज तो सर्विस प्रोवाइडर को दिमाग में रखना है ना कि आपका जो डोबी डाटा है दैट शुड नॉट बी लॉस्ट व्हेनेवर एट एनी पॉइंट ऑफ। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि कभी भी हम डाटा को चाहे तो रिट्राइव कर सकते हैं। मतलब हम अगर अभी अपना वीडियो इमेज फाइल वगैरह बहुत सारा रख दिए, कोई फोटोज वगैरह सब क्लाउड में डाल दिए, और मुझे वो फोटो ढूंढ रहा हूँ मैं, वो मैं जिस फोल्डर में रखा था वो मुझे याद भी है और कहाँ पे स्टोर किया सब कुछ मेरे को पता है।
और जब ओपन करने जा रहा हूँ तो वहां पे मेरा फाइल ही नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा चीज होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो क्लाउड सर्विस हम यूज नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट चला जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी भी वही है, और ड्यूरेबिलिटी एक तो है डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि अवेलेबिलिटी, जो कि जब चाहूँ मैं वो कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे मैं रहूँ, मैं अपना डाटा को रिट्राइव कर लूँ, जहाँ पे इंटरनेट लेकिन एक्सेस होना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, और डिटेल में और भी चीजें हैं, इसको एक बार रीड कर सकते हो तुम लोग। नाउ जस्ट हैव ए लुक टू थिंग्स। वन इज रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डाटाबेस। इसका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी इंटरव्यू में खासकर ये आ जाता है कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो फर्स्ट केस अगर लोगे, दैट इज योर फीचर्स एंड बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर्स। सो टेबुलर फॉर्म of columns and row, that is your what just now we have discussed about the relational database। तो जब भी हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस का, तो क्या होगा, तुम्हारा रो एंड कॉलम में डाटा जो है वो स्टोर होकर रहेगा। और नॉन रिलेशनल क्या होता है, द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स, की वैल्यू पेयर्स, डॉक्यूमेंट, ग्राफ बेस्ड, ऑल आर व्हाट इस नॉन रिलेशनल डाटाबेस। जैसे कुछ इमेज वगैरह हो गया, या डॉक्यूमेंट्स हो गया, ग्राफ वगैरह हो गया, जैसे होता है ना पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब। जैसे कोई चीज का हमें जो है रिकॉर्ड देखना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, या सैलरी का हो गया, या किसी कंपनी का जो है ग्रोथ रेट कैसा है, या किसी कंपनी का पॉपुलेशन रेट कैसे ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग ग्राफ पे ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो उस टाइप के ये सब डाटा को अगर हमें ये रखना है, स्टोर करना है, या हम वैसे डाटा को हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिलेशनल डाटाबेस, राइट। नाउ इफ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, स्कीमा। सो ऑन देयर स्ट्रिक्ट द स्कीमा रूल्स, और ये जो होता है फ्लेक्सिबल स्कीमास होता है। स्कीमा क्या है यहाँ पे बता सकता है कोई? व्हाट इज स्कीमा रूल? The structure. Structure of the database. Yes, good. So what is the schema related to this relational and non-relational? How do you relate that? Sir, in relational database, it can be of table structure, but in non-relational, it can be any structure, means the format can be different. Yes, very good. So basically अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, स्कीमा एक क्या है, एक जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। तो ये जो है बेसिकली अगर मैं रेफर करता हूँ रिलेशनल डाटाबेस को, तो एक फिक्स रूल के तहत रहेगा। मतलब बोल सकते हो लाइक तुम्हारा टेबुलर फॉर्म है तो उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रिक्ट स्कीमा रूल, जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट स्कीमा रूल्स, मतलब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है उसका, हम उसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे तो कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि नॉन रिलेशनल टेबल्स है, डाटाबेस है, और नॉन रिलेशनल जो डाटाबेस होते हैं उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर हम नहीं बोल सकते। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल स्कीमास यहाँ पे क्रिएट होते हैं। नाउ जस्ट हैव ए लुक फॉर द नेक्स्ट वन, बेनिफिट। जस्ट सी हियर फॉर द बेनिफिट। Easy to use relational database. Is of that काम लोग थे बेनिफिट। ओके, तो ये क्या है, एक तो इजी टू यूज, डाटा इंटीग्रिटी, रिड्यूस द डाटा स्टोरेज एंड कॉमन लैंग्वेज लाइक SQL it uses. Like you are creating a table and also we use MySQL Oracle database software, right? So in this case they prefer like any type of language. Mostly they prefer the SQL, right? And they think of it how that the data can be reduced, that where you are keeping it, and how much you can compress the data to store in the storage, right? Because unnecessary, if you have a file, like whenever you send a that your message from the sender to the receiver, if your file size is 2 GB or 3 GB or 5 GB, and if you share on over the internet, it take too much time to reach to the destination. That's why there is a concept called the compression. ये सुने होगे, ये भी OSI लेयर में ही यूज होता है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। ये कौन सा लेयर का काम है पता है तुम लोग को? एप्लीकेशन लेयर।
नहीं, एप्लीकेशन तो टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर में ये सब हो जाता है, बट ओएसआई मॉडल में कौन सा लेयर पे काम करेगा? कॉम्प्रेशन डिकम्प्रेशन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, वेरी गुड। तो प्रेजेंटेशन लेयर में ये बेसिकली हम लोग जो डाटा को सेंड करते हैं ना, तो वहाँ पे रिड्यूस्ड, जैसे यहाँ लिखा है ना, रिड्यूस्ड डाटा स्टोरेज। हमारा टारगेट जो होता है कि हम जितना डाटा जब इंटरनेट पर जब सेंड होता है तो उसको जितना उसका साइज को रिड्यूस कॉम्प्रेस कर सके। कॉम्प्रेस मतलब क्या है? एक्चुअल साइज को हम रिड्यूस कर। जिप फाइल में क्यों लोग सेंड करता है ज्यादा करके? जिप फाइल जब बनाते हो तुम, तो डाटा का जो साइज होता है ना बहुत कम होता है उस केस में। नॉर्मल जो फाइल होता है उसका फाइल और इस जिप फाइल में बहुत ये होता है, चेंजेज होता है। जैसे कुछ तुम लोग जब इमेज वगैरह अपलोड करते हो, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो किसी कंपनी का, और वहां पे पिक्चर बोल रहे हैं तुम्हारा प्रोफाइल फोटो डालो, और प्रोफाइल फोटो का साइज भी वो लोग फिक्स कर देते, बोलते हैं कि नहीं आपको 10 MB का ही होना चाहिए या 5 MB का ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो एक्चुअल इमेज है वो में भी 100 KB का है, हो सकता है, या बहुत ज़्यादा 100 MB का है, सपोज लेट इट बी। अब 100 MB है, वहां से 10 MB तुमको करना था, तुम क्या करते हो उसको कम कोई ऑनलाइन टूल वगैरह ढूंढते हो और उस पर कंप्रेस करते हो और उसको 10 MB में बनाते हो। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग का मेन टारगेट जो होता है कि डाटा जो स्टोर हो रहा है उसका जितना कम साइज हो सके उतना कम साइज रखो। लेकिन अब फिर यहाँ पे एक तुम लोग का क्वेश्चन आएगा, सर हम लोग कम साइज करते हैं उसके बाद उसका क्वालिटी चला जाता है, ये तो होता है ना तुम लोग का, तो क्वालिटी फिर चला जाएगा तो फिर वहां पे फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये जो नेटवर्क लेयर में, आई मीन जो ओएसआई लेयर में जो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन प्रोसेस होता है ना, वो जितना भी कंप्रेस कर देगा तुम्हारा डाटा को जब वो सेंड होता है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन जब डेस्टिनेशन को रीच करेगा ना तो एक्चुअल क्वालिटी ही तुम्हारा मिलेगा। ये प्रोसेस होता है। तो हमारा स्टोरेज के टाइम में भी वैसे ही करते हैं, हम इतना हम रिड्यूस कर सकते हैं डाटा को। इसके बाद नेक्स्ट जो है तुम लोग का नॉन रिलेशनल डाटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, हाई परफॉर्मेंस। यू ऑल नो दैट दिस इज व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज स्केलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस, तो नो नीड टू डिस्कस ऑन दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, लाइक यूज केस। इसमें देखो यूज केस में क्या है, व्हेन माइग्रेशन एंड ऑन प्रीमाइसेस relational workload, or if your workload involves online translational processing। तो अब यहाँ पे इस चीज को अभी रिलेट करो, कैसे इसको समझोगे रिलेशनल डाटाबेस से। हम लोग अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो व्हेन यू माइग्रेट एन ऑन प्रीमाइसेस रिलेशनल वर्कलोड, ओके, और इफ योर वर्कलोड इन्वॉल्व्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, so in this case you use a relational database. How? You have to think of it. And then when you move to the non-relational database, when a caching layer is needed to improve read performance when storing JSON documents, or when a single digit millisecond data retrieval is needed. So let's have a discussion on this in use cases. If you'll take an example of relational database, अगर हम माइग्रेशन करते हैं, व्हाट डज मीन बाय द माइग्रेशन ऑन प्रीमाइसेस? कैन एनीवन टेल मी? Sir, can you repeat the question? just see here ना, यूज केसेस यहाँ पढ़ो। यूज केसेस कैन यू सी ऑन स्क्रीन? Yes, sir. या जस्ट रीड दैट द फोर्थ केस, जस्ट रीड इट ऑल ऑफ यू। रिलेशनल में पढ़ो और नॉन रिलेशनल में पढ़ो। इसका मतलब क्या, तुम लोग क्या समझे? Yes, tell me anyone. Sir, relational databases are used when we need to migrate the data, like we need to move the data from our local server to the cloud server. That is Okay. one of the use cases for the relational databases. Okay, anyone else? Sir, in relational database, our data is stated in a tabular form where
they are all connected with each other tables that are related with a foreign key, where one data is transferred from the local host to the cloud central of the cloud. Okay. And what about non-relational? तो जब लेटेंसी कम करना होता है एंड इसलिए कैशिंग करना पड़ता है जो डेटा को, हम जैसे डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं एंड बेसिकली नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं जब हमें लेटेंसी कम करना होता है सर्वर का सर। ओके गुड। सो देखो, जैसे मान लो अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा है और उसको हम टेबुलर फॉर्म के डाटा को हम अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कि कंट्री का पॉपुलेशन का हर 10 ईयर्स का सेंसस है, उसमें पिछले 2000 में पर्टिकुलर नंबर्स आया पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का, आई मीन पर्टिकुलर कंट्री का, लेट इट बी एग्जांपल ऑफ इंडिया, और 2010 में आया, फिर 2020 में आया, 2030 में आएगा। फिर ये जो है, ये चीज़ को हम अगर हम एक्सेल सीट बनाए या हम लोग कोई टेबुलर फॉर्म में पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करें, और दूसरा भी है कि हम लोग जो है उस चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो कौन सा बेस्ट होगा रिप्रेजेंटेशन? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? अगर चलो वो छोड़ो, पॉपुलेशन का भी छोड़ दो, तुम लोग एक टेक्निकल स्टूडेंट हो, आई मीन यू आर फ्रॉम यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड, ओके, यू आर ए इंजीनियर, ओके, सो व्हेन यू विल रिप्रेजेंट समथिंग टू द क्लाइंट, so sometime like when you use a table and when you use some technical terms and the client is not a technical, they are non-technical persons, so how do you express the things? From that time, we will use the images, pictures, right? So when you use the images and all, when you use the graph, right, then you can present the things in a proper way, and people can also understand. The main goal is that to make the audience understand the things. Our target is that what? At the end of this, we wanted to convince the audience, and in this case, we generally use those type of slides, or whether you are using text file, image file, whatever things you are using it, or your graph you are using it, or table you are using it. So which one will be the best to represent? So that is your target, and you have to think of your audience, whether it's an audience is technical and non-technical. So on that aspect, you have to prepare your presentation like that way you generally do. So non-technical is there, so you generally keep more images so that they can easily understand the things, and you can also explain in a better way. But when you have some technical persons, some researchers or scientists or some engineers, so on there you have to keep that some logical things and the technical terminology on there, and technical things, so that they can, non-technical way, no need to explain, they can understand technical terms as well, right? So in this case, if you'll just take an example of like your caching layers, like generally this caching technique used on the each and every cloud. Previously, what is happening, everything whenever you are fetching, it is fetching from the main server. Like any user is trying to access some of the informations, so every time message is sending to the main server, domain server, right? And there is no edge location or local servers concept. Maybe local server is your host. I mean your that whoever was connecting to the main servers, that can be a local server. But in the meanwhile, there was not a concept like the edge caching or edge location, or there was a intermediary between the cloud server, that is your dedicated your main server, and between the local host or local server. So in between, there was a concept came that is called the edge caching, or you can say that the edge location. So that whenever your data is frequently you are accessing it, right? So earlier, if every time your request will go on the main server, it will be having lots of delay in between. You will have a very high latency, right? So in this case, your job is that what you suppose you are a service provider, so you always focus on the low latency, right? High throughput. Always your data processing speed will be very, very fast. It should reach in the expected time, right? So this thing you need to focus. So when this type of concept came, then they have came up with some caching technique, and the caching is just like providing the storage, or providing that the server nearest to the edge locations, so that whenever the client is accessing some of the file which is on the regular use, on the daily use,
So every time it will not send to the main server. The request will not go to the main server. It will be fetched from the edge location. So then there will be a less latency on that, right? You will not having any delay. Immediately you will get the files. Like the same thing happen on the Netflix or Amazon Prime. If you are using it and watching some videos. So the videos which generally you prefer to watch, those type of video, whenever you open that Netflix, it will automatically will come. I mean, it will show you on the dashboard, right? It will immediately be visible. When you search the first time some new type of videos, some movies and all, then you have to go and it will be fetched from the main server. It takes some time to process it. But those who are frequently were accessing some of these things, even in YouTube also, like sometimes most of you, suppose you watch generally some type of new channels. So whenever you open the YouTube, even you don't subscribe that the new channel, still that new channel videos will be reflected to you. It will be showing to you, right? So I mean, why? Because they understand that the activity of the customers, and from the backend they process in such a way that which type of things you are liking it, they can read it. And now it's a AI nowadays, as you know, that it's a reading from the human behavior, right? So accordingly, they are also processing those type of information so that a customer will not get any delay on that. So they always want to fulfill the requirement for customer and make the customer happy. So due to that, these things happens. Now come to this point, the use cases when the migrate and on-premises relational workload, or if your workload involves online transactional processing. So here, if you have a relational data, especially you'll take an example of the online transactions, right? So on there, when you'll do that, like when you log in to your internet banking site, right? The two things are there. एक तो तुम्हारा local server बोल सकते हो, या local system, या तुम्हारा कुछ host system, that is your mobile phone, your end devices, right? And there, when you enter your username and a password, then initially when it is processing to your site, like in your devices, it is fine. When it is processing from the main server, maybe the cloud server or banking site, if you are accessing it, then it takes some time. It start buffering, it start processing. It takes don't close, don't use any other tab. That time its message used to come. Why? Because this is kind of processing time, or this is especially for the transactional processing time. You cannot do any kind of other tab. You cannot open it. You should not do any kind of technical failure from your end, so that maybe your transaction will be failed. Yeah, definitely your transaction, even it will fail, it will be going the either your account, it will be returned, or it will go to the destinations, or it will go to the receiver side, right? Definitely the money will not be lost, that is fine, but your transaction, maybe it will be failed, right? Because in this situation, your main, or you can say that your on premises यहाँ पे on premises क्या है तुम्हारा जो computer खुद है, तुम्हारा जो mobile phone है, ये तुम्हारा just like on premises in this situation. And then when it is going to the at the processing time, or when it will be reaching to the during the processing, so at that point of time, it will not be in your local machine. This is the processing maybe on the server, main server. So it takes some time. That's why it is, it is asking you to wait for a second, right? Maybe 5 seconds, 10 seconds, right? When it is coming the OTP, when you will enter the OTP, then again it will be processed on the main server, right? So that entire things, this is the what is a type of what you can say that the relational database use cases. And when you will go for the any kind of videos, images, or any type of file which frequently you are accessing is, or document file, so that you relate with the non-relational database, and that is the use cases which will be accesses to the edge location, or it uses the edge cache concept, where immediately it will be fetched to your files from the edge locations, right? So that is the differences from the non-relational and relational. Relational में तुम्हारा जब भी डाटा प्रोसेस होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शनल डाटा जो होता है वो मेन सर्वर पे प्रोसेस करेगा, वो एज लोकेशन से आप नहीं कर सकते, क्योंकि एज लोकेशन पे हम क्या हर दिन का ट्रांजेक्शन हम पहले से रख देंगे, फिर वहां पे सबसे ज्यादा अटैक थ्रेट रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारा जो है अटैकर्स जो हैं, जो हैकर है, वो ज्यादा करके ऐसे अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम को ना यूज करें, डिसेंट्रलाइजेशन यूज कर दे, जैसे ब्लॉकचेन में तुम लोग पढ़े होगे, ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये सेंट्रलाइज ये जो बैंकिंग साइड है, अभी तक बहुत सारे कंट्री जो है ब्लॉकचेन को अप्रूव की है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया जो है अभी सेंट्रलाइज सिस्टम को ही यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो जब भी प्रोसेस होता है वो मेन सर्वर से ही ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी को वो बहुत ज्यादा ये करते हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है कि इनसिक्योर है,
लेकिन वो तुम्हारा जो है वो भी बहुत हाईली सिक्योर है, बट उसके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन सेंट्रलाइज हमारे इंडिया में क्या सोचते हैं कि सेंट्रलाइज है तो हम उसको बहुत प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें इशू है हम उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो भी हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक रीज़न है कि हम जब भी ट्रांजेक्शन कोई ज़्यादा अमाउंट हो या कुछ बुकिंग करते हैं रेलवे टिकट वगैरह, या हम जो है बैंकिंग साइट पे जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा जो होता है फेलियर लॉस होता है डाटा। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है। यही सब मेन रीजन है क्योंकि ये मेन सर्वर पे प्रोसेस करता है हर चीज, एज पे नहीं करता। लेकिन हमारा जो नॉन रिलेशनल डाटाबेस है, जैसे हम इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो, इस जिसका कोई ये नहीं है, कॉन्फिडेंशियल कोई ये नहीं है। हाँ, इमेज ये सब कॉन्फिडेंशियल है बट मनी रिलेटेड नहीं है ना। हम लोग क्या समझते हैं कि पैसा ये सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज है, लेकिन कंपनी लोग के लिए पैसा प्लस प्लस उनका डाटा भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि क्लाइंट का अगर ट्रस्ट चला गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनका बिजनेस को सरवाइव करना, राइट। तो ये केसेस होता है। लेकिन एज केस पे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेड इमेज, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो, ये सब फाइल को हम ये एज लोकेशन पे रख सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। हैव यू अंडरस्टूड दिस यूज केसेस गाइस? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Let's move to Yes, the sir. optimizations. Let's move to the optimizations. So optimize for the structured data stored in the table, supports complex one-time queries through joins. Okay, ये तो joins वगैरह तुम लोग database में ये सब पढ़ा होगा तुम लोग। Optimize for the fast access to the structures, the semi-structured and unstructured data with the high speed and the the throughput. देखो ये तो सिंपल सा चीज है। अगर हमारे पास टेबल का बात कर रहे हैं तो वहां से ज्वाइंट्स आता है, रिलेशनल आता है, टेबल नॉन रिलेशनल का जब बात करोगे तो नॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सब रहेंगे। तो उनको जो है ऑप्टिमाइज, अगर डाटा को ऑप्टिमाइजेशन अगर हमें करना है तो मोस्टली हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? स्पीड पे, थ्रूपुट पे, लेटेंसी को लो करना होगा, राइट। तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो बेसिकली हमें फोकस करना होगा जब हम कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर ऑप्टिमाइजिंग डेफिनेटली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, मतलब वो हाई स्पीड उसको चाहिए, क्योंकि उसका कुछ ये नहीं है कि हम सिक्वेंशियली कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। उसके थ्रूपुट को बहुत हाई स्पीड मतलब क्या? यू हैव टू गो अहेड विद हाई थ्रूपुट, दैट यू हैव टू मेंटेन, then only the data will be fastly, it can be retrieved or it can be stored. At any point of time you can retrieve it, at any point of time you can store it. So for that you have to make sure that your speed should be high read and write speed should be there. High read and write throughput speed मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, थ्रूपुट जब भी बोल रहे हैं ना तो समझ लो करंट डाटा का प्रोसेसिंग स्पीड। अभी मैं कुछ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं कोई चीज तुमको फाइल सेंड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव में, सपोज मैं तुम्हारा गूगल क्लासरूम में कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तो उस समय मेरा कंप्यूटर का जो है, हमारा इंटरनेट जो मैं डाटा कनेक्ट किया हूँ उसका स्पीड क्या है, करंट स्पीड क्या है, वो चीज को हमारा थ्रूपुट बताता है। तो हम करंट स्पीड पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारा नॉन रिलेशनल डाटा है, मेरे को क्लाउड पे डालना है, तो मेरा करंट स्पीड जो है उसी हिसाब से मेरा डाटा वहां पे स्टोर होगा या उसको रिट्राइव कर सकता हूँ मैं। दूसरा केस ये है कि अगर मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ रिलेशनल डाटाबेस को जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म है, we are optimizing for the structured data stored in the tables, supports the complex one-time queries through the joins. अब ये joins का concept तुम लोग पढ़े हो इसमें DBMS में? Yes, sir. क्या होता है joins? बताओ कोई लड़का, anyone, I mean any student, लड़का, girls or boys, anyone. Creating a relation between the two tables. What time you will be finishing? How much time you need? It's going to be finished, madam. Okay. Yeah, this is the last discussion we are going at. Yeah, go ahead, anyone. So join is a query that helps to join two tables with their where things that should be equals to what types. Sir, if we want data from two tables, then we perform the join operation to get the data efficiently. Yeah, you can say that, like whenever you are combining the multiple tables, right? And in this case, you wanted to retrieve the data, you want to process the data from the multiple tables. So for that case, we create the joins concept in the database. So
For this case, when you are processing the multiple, queries or multiple, tables queries, and you are processing at the same time, right? So for that case, we use the concept that is called as the joins, and this concept which will help you to optimize that all the relational data, right? Or it will process that all the data very efficiently and very quickly. So for that case, it has mentioned in this optimization sections of your relational database. I hope it's clear to all. So remaining we'll see in the next class. और ये वाला और बाकी वाला जो है ना, इसके जो PDF जो भी तुम्हारे स्टूडेंट गाइड में है, उसको एक बार तुम लोग सब पढ़ना। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। यहाँ पे जो ये जो दिए है डाटाबेस के जो ऑप्शंस है, RDS, DynamoDB, Neptune हो गया, इलास्टिक कैश हो गया, ये सब तुम लोग पढ़ के आओगे, क्योंकि ये सब नॉन रिलेशनल, ये सब एग्जांपल्स हैं जो सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है। रिलेशनल डाटाबेस का सर्विस एक RDS होता है, लेकिन जो नॉन रिलेशनल डाटा, जैसे DynamoDB बात कर रहे हो तुम, नेपच्यून बात करो, इलास्टिक कैश बात करो, ये सब जो होते हैं नॉन रिलेशनल डाटाबेस है, जो कि अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा रहेंगे। ग्राफ के फॉर्म में हो सकते हैं, तुम्हारे ऑडियो वीडियो फाइल के फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं। ये सब जो है सब नॉन रिलेशनल डाटाबेस के अंदर आते हैं, और इनके सर्विसेज, ये तीनों सर्विस जो है, इसका नाम याद रखना। और DynamoDB तो तुम लोग बार बार यूज भी करते हो, that is a non-relational, and as per now you know that already relational database service is known as RDS. इसको एक बार पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैब करेंगे। थ्योरी आज थोड़ा बेसिक फंडामेंटल तुम लोग क्लियर कर दिया। अगर कुछ डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द लिनक्स सेशन। Guys, am I audible? Yes, ma'am. If the screen is visible to all? Recording stopped. Yes, ma'am. So see here, so here we are proceeding towards the chapter number 7, that is your, we'll be talking about permissions, that is control access to files. So before that, let me give you the little bit details of this particular file. Okay. So when you are talking about control access to files, so in this case, first of all, if I'll give you one kind of preview of whatever we have done like few days back in the previous session, is basically we have created the groups, you have created the users, and then, yes? Anyone is saying something? Am I audible, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So, yes, I think the screen is visible to all, right? Yes, ma'am. So previous session we have know about like how to create groups, how to create the users, and then this particular users will be assigned to the particular groups, and based on this group we'll be putting the ACL, that is access control list, and so on. But here in this particular chapter we will be talking about the things like we will be having some permissions, that is known as read permission, write permission, and execute permission, right? So read permission do have the value called 4, write permission do have the value called 2, and execute permission do have the value called as 1, right? So whenever we have created some files, so like let me give you one case study based on that. So suppose we have created some file, for example this one file, and we want to provide some permission to this particular file with some permissions, like for example I want just read and write, and I don't want to be get execute permission should be there. So in this way the permission should be
looking like. So you might have seen while I was describing you some of the while we are talking about the files, how to find which one is a file, which one is a directory. So based on that, I have told you that we will be talking about this particular pattern, like for example this one, and like this, and then like this, somewhat like this was there, right? And suppose this one. So from the starting, because this one, by this you can understand, we can understand that this one is a file, and these are what? These are basically your permissions. Okay, these are the permissions, and this is what? The name of a file that you want. Now, before jumping into the depth knowledge of this one, so let me show you that what are the how we can say that which one is a group, which one is a file, and so on. Okay, so it is a pair of 3. So first one is basically assigned for the user, next one is a group, and third one is for the other. So whatever permissions you are putting, based on that it will be assigned. Like for example, if you have created a group, so on that group you will be having only, you have given the permission, only the permission is your write permission, right? So the users who have been assigned into some of these particular groups, they will be only able to do write permission. They will not able to do any read permission, is as because it is not been assigned. Neither that execute permission is there. So that is why it will not work, right? But if you'll see in case of your users, so you can see that all the permissions has been given to that particular user. Okay, so for providing this permission, you'll be using one command that is known as your chmod. Okay, and one more permission is also there, chown. So the difference between both of these is, this is for granting or revoking the permission, and this one is you're changing the owner of that particular file or particular directory, right? So when we are discussing about this particular term of providing the permissions and all, there are 2 more operators are also used, that is plus operator, minus operator. So basically plus operator is for granting of the permissions, whatever permissions you want to grant, and minus is what is the use of chmod? Chmod is to provide the permissions, and chown is basically to use for your changing the owner of that particular file or the directory. Now minus sign is basically the revoke. Okay, so these are the 2 operators will be get used, right? Now for example, if you want to grant any permission to the user, so you will be using U as a letter for the user, G is for the group, okay, O is for the other. Okay, so these are the 3 things you need to remember it, right? So let us move to the practical part for this. Let me show you here, because very few things have been given there. So like for example, I do have a file called as F1. Okay, now F1 file is having only, suppose read, write, and execute, again read, write, and execute, and read, write, and execute. Okay, so these are the three basically the permission has been given in the 3 different category, that is user, group, and other. Now for example, I don't want that in the user the read permission should be given, right? So for that, what I need to do, how I'll be proceeding with that one? So I'll be using the command called chmod. Okay, because this is, I don't want from the user, so I will be write user and revoke by using minus, and which permission I don't want, suppose write permission. So then I will be just executing F1. Okay, now then after, when I will be checking with the details, because every time in the Linux, whenever you are performing any kind of practical, so every time it is better to use your, you need to check. Okay, like for example, I will be doing ll
F1. So it will be showing me the detail. So instead of read permission, it will give a hyphen. Then whatever permissions are there, it should be as it is because we haven't changed anything. Okay. Now this time, suppose I don't want that a group should have read option. Others should not be having the read option. So for that, at a same point of time, I'll be using chmod. Okay. Then this is a user, group, and other. So group and other minus R F1 at the same time. Why at the same time only R? Because you can see that both the permissions are same. Now think about at any point of time, suppose it does not need execute, it does not need write. So that is why I will be using two different commands because two different permissions are there. So instead of one command, I will be going for like this chmod because I don't want from the group. So I'll be like this and done and chmod, then others minus write, then F1. Okay, so these are the two things you will be executing. Okay, so this is what in a letter format, right? Now let me show you another format also. We already know that I have just before I have told read, write, and execute do have some values like 4, 2, and 1. So the total number is 7. Okay, now for example, suppose F1 do have read, write, and execute, and here it does not have anything, again anything. Okay, now what will happen right now? So guys, am I audible right now? Yes, ma'am. This is again user, this is again group, and this is again your others, right? So based on that, like for example, with the numbers I will play with this one. Suppose in this I want that it should have all the permission. For the first scenario, first time case study, let us take all scenario it want, right? All the permissions, not scenario, sorry. So what I'll do, I will just use chmod. Okay, so as because each and every permissions are here, so I will be writing 7, and all permission I need here in the group, so I will be writing 7. All permission for the others, so I will write 7. So after that, once you'll perform this one, so you can see that it will be like this. Okay, it will be like this. Clear? Now, for example, let us take that, for example, right now, it does not need, suppose read permission, execute permission. Here, suppose write permission does not need, and here write, for example, read and write. So let us first understand in the numeric way. So if it does not need both of them, so only it requires write, so it will be having 2. It requires read and execute, so 4 plus 1 is 5. And only here it requires execute, so 1. So what we will do accordingly, we will go like this. Okay, chmod. Okay, chmod, and the value should be 2, then 5, then 1, and then F1. Is it clear to all? So after that, if you'll check about the permissions that you according to your requirement, so it got changed like this. Suppose it requires, yeah. So read and execute, then only execute like this.
Am I clear with these two things? It is very important, guys. This particular chapter is very important for your interview perspectives. Is it clear to all? Ma'am, by the help when I use numbers, then we no need to write minus or plus Yes. for When we'll revoking or be granting between. correct. So when we are using your numbers, so that period of time we don't need the alphabetic way of representation, that is UGO. We don't need the grant operator. We don't need the revoke operator, right? So only the number things are there. Now in this case again, when we are using the three numbers, so again the first number is dedicated towards your user, next is group, and third one is your other. Similar way. I hope that all of you are clear with this one. So let us move to the chapter thing. So same thing has been written here. You just go through it and you can just understand the overall concepts I have given to you. Okay. Yeah. Now here it has again given that he has created one directory, that is your consultant. And according to the path, he has given that consultant should be under the directory called home, and home should be under the directory called as a root directory. Okay. Then after you can just check it that it is changing the ownership of this particular directory. So already I have told that when you will be using the OWN, so this is basically changing the ownership of any file or directory. So you can just check it out, like he is giving this particular file should have this owner. So in this way he is checking it out, and again he is checking all the details. That LD means again checking whether he has assigned this particular consultant as a owner of this particular file. So it is checking whether it is there or not. And first one is saying that who is the creator of this particular file. So if we'll check it out, so when this directory has been get created, so it has been created under the user called as a root. So that is why it is showing here root. Clear to all? Okay. And next, second one, it basically shows that who is the owner of this particular directory or file. Clear? Similarly, he is using the G plus W means the group, it is assigning grant permission for write. Okay, to do write permissions. And after that, you can just check it with the numbers he is playing. 0 means no permission he is assigning. Clear? So you'll be doing with this particular chapter number 7 and complete it. Let us move to the chapter number 8 and give me some 1 minute so that I can put my laptop into charge. Okay. So am I audible to all? Yes, ma'am. So in the 8th chapter, we will be talking about monitoring and managing your Linux processes. So when we are talking about the Linux process and all, and before that process state and life cycle, we need to understand for that. So let me just give a brief idea about this one. So I hope that all of you are able to remember your process cycle, right? Because you do have one paper that is your operating system, right? So in the process table, will you help me how to draw that?
First is new, then what, guys? Ready. Then Running. okay, let me write it. Ready, then Running. running, good. Then Terminated. Then yes, then end or terminate, right? Clear? This one, right? If I'm not wrong, is it correct? Just verify. Yes, ma'am. Yeah. So when we are talking about any process, right? So we know that process is nothing but it is an what? It is an task, right? So whenever we are talking about any process, so it is nothing but it is a task, right? So task is basically performed where? In the CPU. And when any task needs to be get performed in the CPU, so we need to understand that. So CPU should allocate some time that is known as somewhat known as a station time. There comes the other concepts like throughput, turnaround, round robin. These concepts are shared there. And you need to remember all these concepts, guys. If you're not able to remember, then remember. And while in the interview, they will ask, and if you're not able to tell, so they will get that first impression lasts long kind of thing. Okay, chalo. So when there is a process, and think about there is a CPU is there and multiple processes or the task needs to work in this particular CPU. So that needs to be get synchronized or something known as it needs to become in a proper pattern or something like that, right? Like first of all, the time should be get there, then scheduling should be there. After the scheduling also there are two other things are also there, that is known as a priority, then interrupt and so on. So I'm not going in detail, that again a case study or something like that. Now whenever there is a task which wants that which should have more more priority, so it will only can create an what? Interrupt. All of you agree with this? Suppose P1 process is there, he's having the higher priority, like for example he's having the higher priority, okay, the higher priority process, and P2 is there, normal process. Now in the CPU, okay, in the CPU, this P2 is holding this CPU. For example, the session time, its timing is suppose 5 minutes. Okay, but a high priority process came into scenario. Now that period of time, what will happen? This process, whatever, suppose think about 100 lines are there in this particular process that needs to be get executed, and only 50% has been done, and it has left how much minute? 2.5 minute, for example, it is left. So that period of time, it should break this connection, and that time it should come into what? Wait mode, and then after it should go for the hold. Clear? How much time it should be get on the hold? Unless and until the higher priority, whatever higher priority, for example P1, okay, is running, until that this P2 should be set on hold. Suppose P1 was it has been assigned with the time called as suppose 2 minutes, but within 2 minutes it didn't finish its process, so it will be get allocate with new timing, new added time should be there, because it is a higher priority. Clear? Now another thing is there, how we will understand which one is a higher priority, which one is a less priority. So for the understanding purpose, kernel is having the first priority, next is your hardware, and the third and having the least priority, that is user level processes. Sometimes we call it as a process or task, like that. Clear? All of you are clear about this one? Is it clear to all?
Yes, ma'am. Okay. Now here, if you'll see in the exercise part, so there are the things like, for example, he has created one directory, and based on that directory, he has created a file, and he has given some scripting scripts has been written into that one, right? And once the script has been written, you need to provide which permission, the execute permission, so that it can get executed, right? So after you will get the execution, so you need to execute it, right? So based on that, it will be get executed. So similarly, here in the terminal also you can just check with the jobs. So those jobs are nothing but the processes, right? So if you'll type only the command call as a job, so it will be showing you the list of jobs right now. It is there in your terminal. Like here, there was one job, that is what? Your control technical, that is what you have started. Okay, so control technical is basically the status is right now stopped. So if you bring it in the background, BG is background, means you need to restart that particular job which status was already stopped, so it will be on working. So after that, once again you will check, so it will be, then check it got started or running, it is in running mode. Okay, so you can just check with the output of this particular, I mean, suppose you do have different other processes also, so you can check with particular command that is known as ampersand to check with the PID of that particular process or the task. Okay, so now for example, right now it do have 3 different processes are there, or the tasks are there, which is all the states are in running mode. And right, for example, you want to stop any process, like you can see that the serial number of this particular process is 1. So if you want to put it in the stop mode, so you will be only writing FG, that is foreground, FG percentile 1. So you can see that percentile 1 was whose? Control technical ampersand. So in that it will get stopped, and you can check that the status right now, once before that it was running, right now it got stopped. So in this way you need to play with this, right? Similarly, the same things are there, how to stop it, how to do these things. Okay, so you just check with all the things. So now one next is, basically if you want to check with all the processes that is running in your terminal, so you will be writing a command that is known as JT. Okay, so with having PPID, that is known as a process ID, process ID, process group ID, SID. So these are all details will be there in your particular terminal, whatever the jobs are running. Okay, so these are the things that you will be working. And if you want to remove any particular process, so you will be using the command called as a RM. In the other guided exercise, you can just check, there is one more command is there, that is known as a kill command. So kill command is basically killing your, means if you will be finally deleting, if you're sure that if you don't want to continue with this process right now, so you'll be using a command called as a kill, KILL. Okay, so these things already I have described. The top command is, again, you can check with the whatever the command, whatever the processes are running, and along with that you can just check what are the different how many users are there, how many time it has been wake up, total number of tasks, how many of are running, how many of them are sleeping, stopped, and all this detail will be there. It is one kind of monitoring the things and kind of things, right? So these are the ways that you can check if you want to check whatever the processes that is running in your CPU. So based on that, so you can just write ls CPU. So whatever the processes currently running in your CPU, those will be get shared here. Okay, so these are the ways that you can check. Okay, so go through with this chapter and complete it up to chapter number 8, because after chapter 11, when you will touch with the chapter 11, 12, these are basically self-based
chapters. But before that also, I'll give you a little bit idea on that, whatever is there in these particular chapters. Okay, so let me check with the chapter number 9. If it is easy, then I will give you to do it, or else I need to, yeah, it is again interrelated with that one. Chapter number 8 and same. It is somewhat very much same basically. If you want to check with whatever the services that is running in your systems and all, so you can just write this one and you can just check it out, all these things. Okay, so chapter number 8 already I have described. 9, you do it, go through it, because same things are there, same concepts are there. Only the thing is right now you'll be checking with the system services. Okay, so there only 2 things are there, that is 2 different guided exercise are there, and you can check that this is very small chapter, only having 1 and 2. These 2 are having your theories. Okay, so complete up to chapter number 9. Clear? Now, those people who don't have any issues, they can leave. And again, I know that till the end of this particular course also, some people will still face the issues. Whoever has the issue to get the access of this particular course, just let me know. Be fast. Ma'am, last Friday, you told me to call you after 5, but you didn't picked up the call, ma'am. Might be I was there in a meeting or something like that. Ma'am, that's why yesterday also you didn't missed out the class. Yesterday, huh? Not missed out, means sir has only taken the whole session. Yes. So, ma'am, can you please guide me like? Wait, one by one. What is the issue that you are facing right now? As I mentioned, ma'am, everything is totally fine, but when I am trying to just like log in, so it is asking for more details. We need little bit more details, information. Because When I you am are logging into the different portal. How many times I need to tell? Guys, anyone in the particular class, please provide him with a link that where you need to access the course. Anyone in the class is there who is able to access the course properly? Please raise your hand. Who have started the course? Raise your hand. Yeah, Kundu, can you just give the link? Just log out from the portal. Let's see how many of you. So log out from the portal. Okay, close that particular page. Then again open the page again. Click that, and when you will be getting the link above. Okay, वो link मुझे चाहिए in the chat right now. Those who are facing, send it. And those people who are facing into the login issues, and like the way same way that one of your friend is facing, they need to please talk with your friends and please resolve this issue by your own. Okay, because this is not an issue. Only the thing is you are just logging using the wrong link. It's not an issue basically. Other people who are having the issues to access the course, those people only just talk with me right now. Anyone is there who is not having any trouble to access the course, or you are when you are logging into your particular portal and you are only seeing that the unauthorized access or something like that? I have shared out the link. Yeah. So just check with this one. Yes, I'm checking it out. Just do one thing. Just delete or means erase your cache memories, and then you just do. Okay. Anyone is there who is facing any issue to log in into your portal? I don't want to do chatting right now, right? Vishwas? Unmute yourself and say. Ma'am, I have the enrollment issue, ma'am. I have What received issue? the mail. I have received the mail that I have enrolled, but when I open the account and log in, it's showing that I've been not enrolled in any course. You got a mail of what? You have access to the course?
Yes, ma'am, I have received the mail, ma'am, but And then login in, then it means that you are using some other ID. Once you got this particular mail, so it means that you have enrolled into this course. Only the thing is, again, check with the proper link, login links. Okay. okay, ma'am. Ma'am, I tried both the links which is provided, but same issue is being done, ma'am. And then you Showing. check it out. I don't know you. Otherwise, you do one thing. You do give me your just give me a direct message. Okay, your user ID and password. Let me check. Ma'am, in WhatsApp I've sent it already. No, Check it out. not in WhatsApp. Here Okay, in the, in normal message, right? yes, direct. Just a second, ma'am. User Ma'am, ID I'm having and issue in password. accessing the lab